जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़ में आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है हमारे साथ। ग्लोबल ट्रेनर है फ्यूचरिक के साथ और एक बहुत ज़बरदस्त करियर है सेल्स में, बैंकिंग में, ट्रेनिंग में और लॉ की डिग्री भी है। आइए मिलते हैं राबिया उमर हसन से। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, Shehzad. How are आ, you? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज ख़ास तौर पे आज वक्त निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you for inviting me. सबसे पहले आई वांट टू नो, यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, और उसमें आपने एक करियर स्टार्ट किया, उसमें आपने बैंकिंग की भी नौकरी की, म्यूचुअल फंड में भी आप रही, एंड यू वर मेनली इनटू सेल्स, एंड देन उसके अलावा कंसल्टेंसी भी है, एंड नाउ अब जो है यू आर माशाल्लाह एन आर्बिट्रेटर एज वेल। सो और आपने लॉ में भी एलएलएम किया हुआ है। सो मल्टी क्वालिफिकेशंस एंड डाइवर्सिटी इन वेरियस थिंग्स, एंड नाउ एज अ ग्लोबल ट्रेनर, as I know about UK, you have been into वेरियस ग्लोबल ट्रेनिंग्स एज वेल। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। और माशाल्लाह से आपके किड्स किड्स भी हैं, 3 किड्स हैं। तो हाउ डू यू मैनेज, एक आपकी फैमिली लाइफ है, फिर क्वालिफिकेशंस हैं, फिर उसके बाद जॉब्स हैं, एंड वे टू गो, मतलब कहाँ से शुरू हुए कहाँ तक पहुँचे। हाउ डू यू समराइज ऑल दिस एज राबिया उमर हसन? हु इज़ राबिया उमर हसन? Thank you, Shehzad. Thank you for identifying me and giving a brief on what I've done so far. I didn't know you know so much about me. Yes, I'm happy with what I've done so far. I've been a banker. I've done my law degree. I'm a trainer for past 10, 15 years. Uh, I'm a mother. I'm a wife. I'm a daughter. Uh, I think it's very important that whatever you do in life, you should be happy with what you've done so far. And अगर आपकी अपनी inner satisfaction नहीं है in what you've done so far, तो फिर ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है. So a lot of people have this woe for me that I'm doing too many things at the same time. But yes, I feel happy. I feel more diversified. I feel more like multi-challenging. As a mother, I tried raising my 3 sons, and it was not an easy task. Being a working woman, I've been working since I, completed my graduation. In fact, I was even working when I was in my first year. I used to give tuitions to students as a first year student. So I don't think I started my work after I sort of graduated. I did my bachelor's in math, stats, economics, and then I did my master's in economics in 1996. But I wanted to do more and also applied for CSS. I studied for a year for CSS, but unfortunately I could not make it. But I don't have a regret because I tried, I attempted. I think आपको हर चीज़ attempt करनी ज़रूर चाहिए कि आपको कोई अफसोस ना रह जाए. बिल्कुल सही। My grandfather wanted me to be a doctor. He used to call me a doctor, and unfortunately, इस फील्ड में मैं नहीं आ पाई, जिसका मुझे अफसोस है. तो डॉक्टर तो आप बन जाएंगी ना, आपकी जब Yes, थीसिस if अगर I पब्लिश complete हो my गए। PhD, yes, यस। inshallah, in 2 years. I'm already an MPhil in law, so if I complete my 2 years, I was sort of deciding on the topic I want to do my PhD on. I did my research on International Criminal Court. I went to Hague for my research, and my thesis will be published soon, inshallah. Recently, I'm also consulting for a law firm, and we've established like a global arbitration center, arbitration, mediation, and conciliation center in Pakistan. And this is the first of its kind because there is one in Lahore, but I mean, this one, what we have created, it's going to be the first of its kind because क्योंकि we've आप got ग्लोबल कोलैबोरेशन के global साथ जा रहे हैं। collaborations in UK, US. We just like collaborated with the largest AIAC in Malaysia. It's one of the largest in Asia. We just recently collaborated with them. So I think banking and law, मैंने समझती कि दो like different चीज़ें हैं, ठीक है, different fields हैं, but बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो like legal area में भी as a banker आपका experience काम आता ठीक। है. और एज अ बैंकर ऑल्सो बहुत सी ऐसे लाइक लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और डॉक्यूमेंटेशन है वे इट हेल्प्स. तो आई डोंट थिंक दीज टू थिंग्स एज टोटली सेपरेट.
यस, बैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस पूरे 25 साल का है. रिटेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, then asset management for 4 years, past 4 years. Then I also started my own company, Roche Developments, which जी. I had been running for 2 years. We were into private equity, financial advisory. जी. And recently I'm also in the process of like giving my global certifications like from CII UK. So I'm in the process of giving those exams. So I like studying. This is something which was in me as a student as well. I really wanted to study and research on like different topics and like write my articles in the newspaper as well. As a child, I used to write like quotable quotes, for Dawn. So I think research, studying, reading books. This has been my passion. और जब से मैं ट्रेनिंग की फील्ड में आई हूँ तो रीडिंग बहुत करनी पड़ती है. I would like to thank my mentors like Karen Alawala, Ramiz Alawala. Ramiz तो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, आमीन. But Karen has been there for me and they've worked a lot on me, on my presentation skills, on my training skills, and they also gave me like one of their like trainings on first time manager, which was one of the best trainings. How important it is एक mentor का होना? I have 21,000 followers on LinkedIn, mashallah say, and I try, mentoring a lot of people who seek my help and guidance. I like doing that. I like helping people with their like recruitments or anything they want. या कोई भी उनकी कोई चीज़ stuck up है या where I can add value. I always try to be for everyone. But it's just that as a trainer, I think बहुत important है कि आपका passion. अगर आपका पैशन नहीं होगा एज अ ट्रेनर तो यू कैन नॉट एड वैल्यू टू दिस थिंग. सो आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय टॉनी रॉबिन्स. अगर आपने कभी उनकी बुक्स पढ़ी हो, अवेकन द जायंट विद इन, फिर उनकी नई किताब आई है अनलिमिटेड पावर. सो यू मस्ट रीड दैट, इट्स अमेजिंग. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर and then one day he was standing in front of the mirror and he was asking himself, is that what I want from life? And he changed his profession to a trainer, an author. He struggled for a year or something, but then he became one of the famous authors and trainers. So Yes. I've been very inspired by Tony Robbins, and I still seek his guidance. I am part of the Real Summit speakers sessions, so जी. it's an amazing session. And we get to meet all top leaders from the world. We get to know what's happening globally, and I think बहुत learning मिलती है आपको different इस तरह के वेबिनार्स और सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस देके. तो आई गेस सॉरी मैं स्टॉप करूँगा यहाँ पे. आप खुद भी तो एक इंस्पिरेशन है ना. मेरा सवाल आपसे ये होगा, पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ आज भी हम एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट जो लास्ट ईयर मार्च में पब्लिश हुई थी, उसमें हमारी रैंकिंग है 153rd. बिल्कुल ठीक है. हमारा जो वर्किंग जो फीमेल हैं उनका रेशो ग्लोबल के मुकाबले में उन ग्लोबल का अगर वो से अराउंड 50% है तो वी आर ऑलमोस्ट 20%. और जो सीनियर जो आपके मैनेजमेंट में जो ख़वातीन हैं वो लेस दैन 5% है. ठीक है. ऐसी कंट्री में यू हैव डन सो मेनी थिंग्स. अच्छा, यहाँ तो या तो एजुकेशन में कहीं ख़वातीन रुक जाती हैं, अगर कर भी लेती हैं, क्वालिफिकेशन कर ली, फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट ख़वातीन हैं, दे आर नॉट परसुइंग देयर करियर फर्दर, क्योंकि शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर होम मेकर भी तो एक बहुत बड़ी जॉब है ना. तो अच्छा, उस होम मेकर का वो भी नहीं है, कोई रिकग्निशन या कुछ वो भी नहीं होती यहाँ पे. सो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा, जो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हमें देख रही हैं, क्या चीज़ आप उनको सिखाना चाहेंगी, कैसे वो सर्वाइवल स्किल्स करेंगी? शहजाद, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हमारी वर्किंग वुमेन की जो प्रेजेंस है, अगर हम ग्लोबली देखें तो अराउंड 50% है और हम 20% पे, और सीनियर मैनेजमेंट पे इट्स जस्ट 4 to 5%, आई गेस यही रेशो है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. आई थिंक टाइम इज़ अप दैट वी शुड हैव मोर फीमेल्स ऑन सीनियर लेवल रोल्स एंड सीनियर मैनेजमेंट. एंड अब तो लाइक स्टेट बैंक की तरफ से भी है कि हर बैंक के बोर्ड में भी देयर इज गोइंग टू बी अ फीमेल, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी एंड लाइक गुड इनिशिएटिव. So I guess we need to work on this platform के थोड़ा women leaders पे काम करने की ज़रूरत है, उनको chance देने की ज़रूरत है. I mean, I've worked with alhamdulillah
टॉप लीडर्स इस वक्त मैं एग्जांपल दूंगी मैडम सीमा कामिल का, द डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सीमा वाज an inspiration for me always, and she always encouraged me to take up like different roles. मैं जब retail banking से commercial banking की तरफ आ रही थी तो 2 महीने I was stuck in the middle, and like Madam Seema was very very helpful in that, and alhamdulillah I moved to commercial banking. And then when I was moving to asset management industry also, she was encouraging at that time as well. So I think female leaders का encourage करना females को भी ज़रूरी है, because sometimes you need guidance, and sometimes people are looking up to you. So I guess this is a very important thing. Plus I think overall भी हमें पाकिस्तान is a very competitive country, और अब क्योंकि emerging market में भी आ रही है, with the help of China we are doing so many things in Gwadar. 5,000 industries are about to be established very soon. So we need to now start empowering our women and try to involve them into different startups, different जो शायद नहीं भी आना चाहती हैं उनको भी encouragement की ज़रूरत है, motivation की ज़रूरत है बेसिकली. और जो आपने बात की कि बहुत सी फीमेल्स पढ़ाई करके और अपने हाउस होल्ड में लग जाती हैं, जो भी उनका एक फ़र्ज़ है. मैं वो नहीं कहती कि वो अपने फ़र्ज़ से वो हों, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा अपने अंदर चैलेंज लाएं, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लाएं, किसी को अपना इंस्पिरेशनल लीडर बनाएं. बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई ना कोई इंस्पिरेशनल है, आपका कोई ना कोई मेंटोर हो जिसको आप लुक अप करें. I think I have been doing this. I had so many inspirational leaders in front of me. I used to follow them. I used to look up to them. So that's a very important thing कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई inspirational leaders होने चाहिए जिनको आप follow करें. बहुत important point. बहुत important point है ये. तो एक point तो आ गया inspiration का, but I would like to know more. For example, environment, for example, training and development, education, ऐसी जो चीज़ें या for example आपके वो जो होते हैं जो when you are working, तो आप अपने बच्चे को कहीं रख सकें. What do you call it? जो child care type की जो facilities होती है. But ये मैं आपसे पूछूंगा. नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं. जी वेलकम बैक नाजरीन. जी ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, दैट कुड बी इम्प्रूव्ड. इधर एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, या और कोई चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाह रही हैं. I think we all know about the UN 17 the sustainable goals, SDGs, which yes. is the most important thing. ठीक. सबसे most important goal इस वक्त क्या है पाकिस्तान के लिए? No poverty. वो no Goal number poverty 1. कैसे होगी? जब तक आपके लोगों के अंदर स्किल्स नहीं आएंगी, आप स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे. Focus on degrees, yes, that's important, but every other person has a skill inside him or her. Like I have a training skill and I'm passionate about that. I had a tough time when I was working with organizations. और कोई ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म आ जाता था, मैं स्ट्रेस में चली जाती थी कि मैं ट्रेनिंग कैसे करूँगी, उस दिन तो ये मीटिंग्स हैं क्या. But I used to make time. I used to fight for my trainings. I used to make sure that as a trainer मैं compromise अपने आप को नहीं करूँगी, चाहे बेशक नौकरी और नो नौकरी. But as a trainer मैंने हमेशा अपने आप को available किया, because मुझे था कि I'm educating someone, I'm giving a session to someone, I'm teaching someone, I'm educating someone, something which I know, which is my skill, I'm passing on to others. I think it's high time we should come up with more trainers, more motivational speakers. COVID 2 साल से people are going through mental health problems, challenges in their lives. I think all are looking for inspirational leaders and motivational speakers. This is something like depression is increasing day by day, because it's a fact. 2 साल से लोग घरों में बंद हैं. ये I mean it's an understood thing that they are going through some like challenges, and they need some kind of motivation. मैं ये रियल समिट की ट्रेनिंग्स 3 दिन की कांस्टेंट होती है. मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं ये 3 दिन कांस्टेंट दिन रात अटेंड करूँ, बिकॉज स्पीकर्स आर कमिंग ऑफ एंड ऑन. आई डोंट इवन वांट टू मिस वन स्पीकर. In fact, I want to be like them. I want to be a speaker in the real summit in next 2-3 years. This is my vision.
सो जो एंड खवातीन हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी? दे शुड अपनी ऑल्सो मेक। स्किल्स पे काम करें. स्किल डेवलपमेंट के कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट स्किल्स सिखा रहे हैं. एम्ब्रॉयडरी हो गई, चीज़ें ऐसी हैं जो लाइक कुकिंग हो गई. एज अ शेफ़ आप काम कर सकते हैं. आजकल हर होटल को एक शेफ़ चाहिए. देर इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ स्किल्सटन. मैं अपनी जो कुक है उसको लेके गई हूँ उस दिन वहाँ पे. और मैंने उनसे कहा इसको आप सर्टिफाई करवाएं कि इसके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्लोबल निकल सकेगी. कब तक मेरे लिए काम करेगी? इसका भी कोई विजन हो, इसकी भी कोई इंस्पिरेशन हो. And she loved the idea. She went with me and she was so thankful to me. She said, I can learn this, I can learn that. This is a like great platform. So it's, I mean, I'm just giving an example. We need to empower women. We need to bring more women and educate them how to increase their skills. ये तो मैंने आपको एक स्किल बताई है. इस तरह की हजारों स्किल्स हैं. Training is also a skill. Why can't we have more trainers? ठीक. This is something where you can make money. You can actually make good money. पैसे बेशक कम हो, but it's just that a feeling of inspiring someone, I think इससे बेहतर feeling नहीं हो सकती. ठीक. When I stand in front of any class or any of my digital sessions, I feel so good. The start when I'm introducing myself as a trainer, I'm so proud of myself. So this is the message I want to give to others, that come into like different areas where you can improve yourself, where you can add value to the economy, to the country. क्योंकि आपकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, आई वांट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज जो खवातीन देख रही हैं, बहुत सारे फीमेल हैं आफ्टर डूइंग देयर MBBS या MBA या इवन CA, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई घर की, बच्चे छोटे हैं, तो दे हैव टू सेक्रीफाइस. क्या ये आज के दौर में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब चीज़ें रिमोटली हो गई हैं, फ्रीलांसिंग अवेलेबल है, फ्लेक्सी आवर्स हैं, पाकिस्तान में ठीक है ट्रेंड अभी कम है, लेकिन ग्लोबल बहुत बड़ा ट्रेंड है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं. सो हाउ दे कैन जो अपने आप को री स्किल करके ये सारी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाए, नंबर 1. नंबर 2, एज ए आप चूँकि वो ट्रेनर भी हैं एंड स्पेशली फ्यूचर एक, हाउ वी कैन हेल्प दैम कि वो घर पे बैठे बैठे अपने आप को रीस्किल करें, अपने आप को प्रोफेशन में वापस लाएं, और बेशक जो जिम्मेदारी है बच्चों की उसके साथ साथ मैनेज करें. Shehzad, इसमें I think a very important role is of a husband. Like in my case, my husband has been very encouraging throughout. In fact, जो हमारी अपनी कंपनी establish करने का idea था, when I left HBL Asset Management and I thought that I'm on the road and with nothing and with no, he said, why don't you come up with your own company? You're a trainer. Start developing your own trainings and start doing trainings. So we came up with the idea of Rosh Development, and I'm proud to say that. Pera Roshan Digital का platform हमने organize किया था for Karachi, where we had Sharia advisors, we had different bankers, and we were a part of that platform. It was one of the first like platforms But for the Roshan इस केस Digital में accounts. आपका खुद पैशन भी था काम करने का. पैशन भी था, लेकिन साथ साथ हस्बैंड की सपोर्ट भी थी. He's still very supportive. से हस्बैंड की ये सपोर्ट है. एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूँ. सो आई एम हैप्पी वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू. ठीक है, अब वो नहीं करना चाह रही तो आई एम ओके विद दैट. वो करना चाह रही है, आई एम स्टिल ओके. I think इन बोथ केसेस आई एम गोइंग टू सपोर्ट हर. keep pushing her. पुश में शायद उसको ऐसा फील हो कि मुझे पुश क्यों किया जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी तो एक चैलेंज है ना. तो आई कैन नॉट पुश फॉर समथिंग She should ये actually करें या ये think of करें. what she's good at. कोई ना Yeah. कोई स्किल उनके अंदर होगी. ठीक है, बेचारा अकाउंटेंट है, बट I कोई ना have कोई स्किल. identified she has excellent writing skills. तो उसने Amazing. लिखना She भी शुरू किया. should do content writing. This is one thing which she can come in. Like मेरी एक दोस्त है, she had like breast cancer in US, and she was on the bed for almost a year and a half. She found out during that period when she was on the bed that she was a great painter. She started painting, and there was a skill in her. She was very good with drawings always in our school life. I was worst at it. I was not art. I love art. I'm a fan of Jimmy Engineer. I'm a fan of all top painters. I've got their collections, but I'm not a painter myself. And this is something which is not in me. So she came up with this painting skill in her, and she started paintings. And now she's, mashallah, okay. She came to Karachi for a visit, and she was proudly saying, oh, I'm a painter now. I could see the happiness on her face.
Because she thought when she saw me and she saw some of our other friends who were working, she was not working. So she used to feel a little low. But Yes. this time when I saw her, she was very happy that she came up with a skill of painting. And she's doing that and she's enjoying it. And I felt so good for her. So ये जो fulfillment है ये बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. And आपका अपना satisfaction when you get up daily and see yourself in the mirror and Like- ask yourself, is that what you want from life? Some people say I'm not focused. Some people say I'm doing too many things at the same time. I don't care. It's about what I feel good about. absolutely. I've done my 2 degrees. I mean, I did my law later after my marriage. It was not easy. Taking classes in the evening, काम भी है, classes भी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है. But मैंने पढ़ाई को sacrifice नहीं किया. I would like to thank Barrister Shahida Jameel for giving me a vision. She was my professor at SM Law or International Law पढ़ाती थी. When I was having like हमारी ऐसी discussion हो रही थी, and I told her that I'm planning to make a trip to Europe. She gave me this idea. Why don't you do your thesis on International Criminal Court? She said, I always wanted to do that and I didn't get a chance. Why don't you do it? And then I made sure that I followed the directions. It was not easy for me to getting inside their library. I mean, it was a check every day when I used to go there. 40 minutes to mera like passport check hota tha. Every day it was a story. मैं एमर्सफोर्ट एक जगह है एम्स्टरडैम से थोड़ी आगे वहाँ ठहरी हुई थी. आई यूज्ड टू कैच अ ट्रेन 6 o'clock in the morning and I used to come to Hague. और 40 मिनट मुझे लगते थे सिर्फ अंदर लाइब्रेरी तक जाने में every day. But I didn't care. I was doing something good. I got this chance of attending trials of international criminal like Dominic Ongwen. I got a chance of interview किया. उसका जो lawyer आया हुआ था उसका interview session किया मैंने. I met so many high profile people. I mean, attending a live trial in International Criminal Court was something big for me. I mean, it was something very special for me. I still feel that. And जब मैं अपने thesis के interview के लिए like judges के आगे बैठी हुई थी तो they knew about my trip and they knew that I went to Hague and did my research. तो पहली चीज़ ही उन्होंने यही start की कि you're the only student from Pakistan who went to Hague for the research on this topic. How was it? And I felt so good. So it's about exploring your own self. Some people might think that I wasted my time going there and I don't care. It's about what made me happy. I did that. How do you discover yourself? And you does not mean you, anybody. कैसे कोई अपने आप को discover करे? सबसे कि पहले वही पॉजिटिव एटीट्यूड. हम्म, नेगेटिविटी हर एक की लाइफ में होती है. कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, बस लेकिन नहीं हर बात पॉजिटिव होती हूँ. बट पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड. My husband is a very positive person. He tries making me positive all the time. So I've learned this positivity thing from him. That no matter what is happening, but he will be positive. He will be laughing. So I try to educate this in my training sessions as well that हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे. मेरी पहली जो सेशन होता है इंट्रोडक्शन का उसमें मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहली चीज़ कि we will not talk anything negative today. We will only talk about positive things. very good. मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मेरी प्रमोशन स्लो हुई, मेरी ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिव. नो, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग नेगेटिव. इनफैक्ट एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ, से 3 strengths of yours. आपके अंदर क्या 3 strengths हैं जो आपको पता है कि आपकी strengths हैं. 3 things about your organization. What you think is so powerful about your organization where you work. So I always ask this question just to make sure that they're all positive and on the same track. नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. जी वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था रैपिड फायर राउंड का. जी रैपिड फायर राउंड में हम आपको कुछ छोटे छोटे से टॉपिक देंगे एंड हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो इसमें रैपिड आंसर तो देते हैं, साथ साथ में कोई उसमें फायर भी इग्नाइट करते हैं. सम कैची फ्रेजेस, सम इम्पॉर्टेंट कोई ऐसी चीज़ें. सो फार वी हैव नॉट प्रोवाइडिंग गिफ्ट्स टू आवर गेस्ट, बट इन फ्यूचर जब मैनेजमेंट वुड बी हैप्पी तो हो सकता है कि फिर हम उस पर विनर्स को जो है कोई गिफ्ट भी दिया करें. सो आर यू रेडी फॉर दैट? Of course. सो
सबसे पहला सवाल जो सबसे पहली चीज़ है उसके मुतालिक है, आपका क्या व्यू है वन लाइनर में लीडरशिप? We often talk on leadership, and we've been on leadership roles as well. I think leadership, in one word, is about your vision. It's about teamwork. It's about taking the team with you ठीक, and managing the team. सही. अच्छा, आप खुद भी माशाल्लाह से एक ब्रांड हैं, तो मैं आपसे एक लाजमी व्यू जानना चाहूँगा, छोटा सा वन लाइनर, एंड देन लेटर ऑन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन. सो व्हेन आई से दिस वर्ड, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? पर्सनल ब्रांडिंग. Personal branding is about you. It's about Shehzad Dhedhi or Rabia Umar as an individual. Yes, we've been attached with a lot of names in our lives. Our father's name, our husband's name, our organization's name with us. But it's about you. It's about what you are. You're an entrepreneur, or it could be anything which like describes you as a person. As Rabia Umar, what is Rabia Umar? Is she a banker? Is she a trainer? Is she a legal person? Is she a motivational speaker? It should describe all about you. Now, अब मैं रैपिड को छोड़ के अब एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा कि लोग कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, क्या स्किल्स ज़रूरी हैं, और इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग प्लान की हुई है कुछ के किस I तरह think से? the most important thing in creating you as a brand is about your networking skills. Alhamdulillah, I'm a great networker. I try participating in different events. I try, like meeting new people. I like meeting new people, learning about their ideas, what they have, what I can do with them. मेरे एक्स बॉस हुआ करते थे, उन्होंने एक बात एक दफ़ा की थी जो मुझे हमेशा याद आती है. वो कहते थे, जिस दिन तुम ये समझोगी कि एक क्लाइंट को दूसरे से किस तरह मिलाना है, उस दिन मैं समझूंगा तुम्हें बैंकिंग आ गई है. Okay. And I think Connecting people. he was so right. Connecting people. Okay. And globally अगर आप देखें, अगला जो 10 साल नज़र आ रहे हैं, मेटावर्स और ये बातें चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेटावर्स में क्या है? आप यहाँ बैठे हुए हैं, चाइना में मीटिंग करके आ गए, इंडोनेशिया में मीटिंग करके आ गए, मेटा वर्ल्ड में गए, आपकी प्रॉपर्टीज मेटावर्स पे आ गई, आपकी हर चीज़ मेटा पे. So this is the future. Meta is the future. So it's high time that we should equip ourselves digitally. Digital banks क्यों अब encourage किए जा रहे हैं? हर बैंक डिजिटल की तरफ क्यों जा रहे हैं? हर इस वक्त फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, फिनटेक पे, टेक्नोलॉजी पे इतना काम कैसे शुरू हो गया? Because this is the future. Again, coming back to rapid fire round, start with why. Why factor कितना ज़रूरी है? Because why is the word which describes you. Why I'm here, why you're here, why what you are. So I think the why factor is very important in anybody's life. What do you want to say on that? I guess that's the thing. मेरा तो ये ख्याल है कि why is the most important question. So true. बाकी सब how, what, when ये सब फिगर आउट हो जाता है, ये सब इवॉल्व हो जाती हैं चीज़ें. आपकी अच्छा, people will always buy your why. They are not concerned about what and when True, and how so of you. true. They are always concerned about why. And Shehzad, it's always about you. It's not Yes. about people. Yes. It's always True. about what you want, what you are. I told you I was very inspired by Tony Robbins. He was a lawyer. And one fine day he decided that, no, this is not what I want. I want to be a trainer. I want to be an author. And he changed his life completely. It's about what you are, what you want. So actually he It's about you. so he He rediscovered. rediscovered himself, yes. And it's amazing rediscovering yourself with something new. Because sometimes एक ही चीज़ कर करके monotony आ जाती है. You have to have new things in your life कि वो monotony ना आए. I think like that. I don't know about others, but I think like that. I like coming up with new things, new ideas, new like collaborations. अभी हमने globally इतनी countries में collaborate किया है with arbitrators. This was a field I was never into, and this was something which I had never done. But up when I'm collaborating, meeting
arbitrators, learning what they specialize in, how we can collaborate with them, how we can add value to their business or they can add to our business, and how we can collaborate between both countries, international disputes. We can help importers, exporters, all these people with their issues. This is something which is new for me. But because I have an experience of banking for 25 years, मैंने नहीं समझी कि मैंने ज़ाया किए, आई because थिंक वो आगे help आता है. कलेबरेशन में भी वाई कनेक्ट होती है, True. पर्पस कनेक्ट होता है. True. मेरा और Your पर्पस, आपका objective. पर्पस अगर सेम होगा Why तो you want to we will be collaborate? Your objective. ठीक हो गया. रैपिड फायर पे अगला सवाल है, पाकिस्तान इकोनॉमी कैसे देखती हैं आप, और ख़ासतौर पे जो डिजिटल एज की बात करते हैं, ख़ासतौर पे वीमेन एम्पावरमेंट अभी भी नहीं है हमारे यहाँ. I think शहजाद, it's high time कि हम economic empowerment पे काम करें. Women ठीक. economic empowerment. ज़बरदस्त. To make them financially sound. To understand how will they earn their living. तो ये बहुत important factor है जो Excellent. हमें सोचना चाहिए. ज़बरदस्त. लास्ट है मेरा, पैशन की आपने बहुत ज़्यादा बात की आज के पूरे इंटरव्यू में. तो एक तरफ है पैशन, दूसरी तरफ है कि एक पर्टिकुलर स्किल सेट, क्राफ्ट्समैनशिप जिसको हम कहेंगे, कि एक्सपर्टीज़ हैं पर्टिकुलर फील्ड में, से अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज़ है, उसमें भी किसी निश में आपकी एक्सपर्टीज़ है. सो पैशन वर्सेस एक्सपर्टीज़ इन अ पर्टिकुलर निश, कैसे देखती हैं आप? Expertise are important, of course, because कोई ना कोई फील्ड में आपने स्पेशलाइज करना होता है. That's a fact. चाहे वो रिलेटेड टू कोई भी फील्ड हो, लेकिन पैशन एट द सेम टाइम, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जब तक पैशन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं. आप जो भी काम कर रहे हैं विदाउट पैशन करेंगे, डीमोटिवेटेड होके करेंगे, अनसेटिस्फाइड होके करेंगे, चाहे वो कोई भी वर्क एनवायरनमेंट हो, दैट्स नॉट हेल्दी. सो पैशन इज, आई गेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वट एवर फील्ड यू चूज, वट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन और हैव एक्सपर्टीज इन. पैशन मेरे हिसाब से आपका एंथुजियाज्म, आपका इंस्पिरेशन, आपका पैशन, दैट इज द की. थैंक यू राबिया. Thank you बहुत so बहुत much for शुक्रिया. inviting me. It was a lovely session, and the Any- best thing, what I liked about the session, that we were talking Interacting. generally and chit chat. बिल्कुल. Thank you. जाने से पहले कोई लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, और ख़ासतौर पे हमारा भी एक नेटवर्क है CFO क्लब, एनीथिंग व्हाट वी कैन डू टुगेदर CFO क्लब के हवाले से, और भी नेटवर्क्स हैं, एनी व्यूज, एनी अदर एडवाइस यू वांट टू गिव अस? Yes, of course. I'm on LinkedIn as well. I have a page which I keep sharing. We're planning an event on the 19th of February on personal branding by Futuric. So I would request you all to try participating, or send as many participants as you can. If you're a CEO of a company or a HR head of a company, try attending the session. It's a very creative session. We've worked a lot on that, and we made a lot of effort on that. So thank you very much for everything. I insist you should join something on personal branding, और ख़ासतौर पे जो डिजिटल दुनिया में you should learn लिंक्डइन को आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस कैसे रखनी है, कैसे अपने वाई फैक्टर को दुनिया को बताना है कि who are you and what you are doing and what they should be looking for in you. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.